आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली द रिलेटिव मोशन एनालिसिस ऑफ टू पार्टिकल्स। थोड़ा सा इसके हवाले से मजीद बात करते हैं। Up till now, the absolute motion of a particle has been determined using a single fixed frame of reference. However, when the path of motion for a particle is complicated, sometimes it is more feasible to analyze the motion in parts by using two or more frames of reference. For the time being, we are going to consider only translating frames of reference and we are not going to consider the rotational frame of reference. अब ये है क्या topic? In order to understand this topic, let us consider a particle, say this particle A, which is traveling along a path represented by path A as shown to you in the figure. Right now this path is shown to you as a curved path, but this may be any path. Maybe it may be a straight line path or it may be a curved path as shown to you in the figure. Then you have another particle, which is this particle B, and it is again traveling along some path which is being represented by path BB in the figure. Again, आपको curve path show किया गया, but it can be a straight line path as well. So you have two particles, both of them are traveling at their own paths A and BB respectively. Now, if I ask you to define the position of particle A, then as per our previous understanding of this chapter, this is a stationary frame of reference जिसके origin को मैं O से represent करता हूँ. So if I ask you to represent the position of particle A, you are going to use a position vector which is this position vector RA, which is being referenced from the fixed origin O. तो ये position vector RA है. अब ये position vector आपने किसी ना किसी specific coordinate system में लिखा होगा. बेशक वो coordinate system आपके पास XYZ coordinate system है या NTB है या R theta V है, but this position vector is going to be referenced from the fixed origin which is origin O of the XYZ coordinate system. Okay, similarly अगर मैं आपसे कहूँ कि please define the position of particle B. So for particle B again you are going to use the same method to define a position vector which is this vector RB, which defines the position of particle B with respect to that fixed origin. Now समझने की बात क्या है कि चूंकि ये दोनों position vectors RA and RB are being referenced from a fixed origin O, so वो तमाम चीज़ें, वो तमाम quantities which are being referenced from a fixed origin are termed as absolute thing. For example, this position vector RA, since it is being referenced from the fixed origin, so it is termed as the absolute position vector. Similarly, this position vector RB, since it is being referenced from the fixed origin, it is also termed as the absolute position vector. So both vectors RA and RB are absolute vectors because both of them are being referenced from the fixed origin. इसके मुकाबले में अगर मैं आपसे कहूँ कि you need to define the position of particle B with respect to particle A, which itself is moving along the path AA. So in order to define the position of B with respect to A, you are going to define this vector which is RBA vector. Now this vector, since it is being referenced from a moving point rather than a fixed origin O, तो वो तमाम चीज़ें जो कि फिक्स्ड ऑरिजिन से रेफरेंस नहीं की जाती बल्कि किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मेजर करते हैं, those things are termed as relative things. So in this case, this RBA is basically termed as the relative position vector, which defines the relative position of B with respect to A, whereas these two vectors RA and RB, since they are being referenced from the fixed origin, so they are termed as the absolute position vector. So आपके पास relative position vector RBA आ जाएगा, and by vector addition, अगर इस vector addition को देखें, so RA plus RBA should be equal to RB. That is, the absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. अब ये तीनों चीजें जो है, they are basically vector quantities. Vector quantity से क्या मुराद है कि आप simply 2 plus 3 equal to 5 नहीं लिख सकते. Rather, आपने इन तीनों position vectors को, बेशक वो absolute हैं या relative हैं, किसी ना किसी coordinate system में लिखा हुआ होगा और coordinate system में लिखने के बाद आप इनको vectorically जो है वो add कर रहे हैं. So RB should be equal to RA plus RBA, that is the absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि you need to find out the
relative position of A with respect to B. So in that case आपका जो वेक्टर RAB होगा उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? It is going to be RA should be equal to RB, which is the absolute position of B, plus the relative position of A with respect to B. तो आपकी इक्वेशन जो है वो इस तरह बन जाएगी. अब इस इक्वेशन में देखें, बेशक आप वो ये वाली इक्वेशन देख लें या AB वाली इक्वेशन देख लें, इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसकी भी आप रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, RBA फाइंड आउट करें, सो RB शुड बी रिटन फर्स्ट, इट शुड बी इक्वल टू RA प्लस RBA. इसी तरह अगर आप रिलेटिव पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B फाइंड कर रहे हैं तो देन RA शुड बी रिटन फर्स्ट, इट शुड बी इक्वल टू RB प्लस RAB. फिजिकली अगर हम देखना चाहें तो बोथ दीज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर RBA एंड RB दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite to each other. For example, RBA is basically the relative position of B with respect to A. जिसके रिस्पेक्ट से आप फाइंड आउट करें वो एक तरह से कर क्या है कि you as an observer are considering yourself to be standing at point A or position A. इसी तरह अगर आप relative position of A with respect to B कर रहे हैं, so as an observer you consider yourself to be standing at point B and looking towards पार्टिकल A, तो उसकी पोजीशन आपको किस तरह की नजर आएगी. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव पोजीशन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन वेक्टर. थोड़ा सा मैं अगर समराइज करूं तो रिलेटिव तमाम वो चीजें जो कि किसी ना किसी मूविंग ओरिजिन से, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर की जा रही हैं, दे आर टर्म्ड एज रिलेटिव थिंग. वो तमाम चीजें जो किसी फिक्स्ड ओरिजिन से रेफरेंस की जा रही हैं, दे आर टर्म्ड एज एब्सोल्यूट थिंग. देन the relative position of B should be equal to the relative position of A plus absolute position of B should be equal to the absolute position of A plus the relative position of B with respect to A. और वेक्टर एडिशन के हवाले से अगर हम देखें, RBA को अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो बेसिकली RBA वेक्टर शुड बी इक्वल टू RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर. अगेन या आप ग्राफिकली इनको वेक्टोरिकली ड्रॉ कर लें या आप इनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के सबट्रैक्ट या ऐड कर लें, यू कैन फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन वेक्टर. इसी तरह अगर मैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर RAB की बात करूं तो दैट वेक्टर इज बेसिकली RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर. तो जब भी आप रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं वो आप इस तरीके से रिलेटिव पोजीशन जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. Okay, now once we have talked about the relative position, now in order to find out the relationship of velocity, हम करेंगे क्या कि हम इस पूरी इक्वेशन को with respect to time जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे on both sides. तो आपके पास dr by dt जो है वो velocity बन जाती है. तो the first term would become vb, which represents the absolute velocity of B. It should be equal to the absolute velocity of A plus relative velocity of B with respect to A. आपकी ये जो RBA वाली टर्म है, it would become VBA, which represents the relative velocity of B with respect to A. अब इस relative velocity से मुराद क्या है कि again if you consider yourself to be standing at point A, आपको B की velocity किस हिसाब से नजर आएगी वो बेसिकली ये VBA रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली आपके पास एक्सेलरेशन में भी यही रिलेशनशिप आएगा. जब आप velocity को एक दफा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, AB should be equal to AA plus ABA, where ABA represents the relative acceleration of B with respect to A, and AB and AA represents the absolute accelerations of B and A respectively. So basically आपके पास ये तीन relative motion equations आ गई हैं. One is this equation, which is the relative position equation. This one is the relative velocity equation, and this one is the relative acceleration equations, which are going to be used for solving various problems relevant to this topic. इसमें जिस तरह मैंने पहले कहा कि इस सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. RB should be equal to RA plus RBA. अगर आप यहाँ RAB लिख देते हैं तो then your equation would be wrong, because by definition this RBA is not equal to RAB. Rather this RBA should be equal to minus RAB. यानी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं ये दोनों वेक्टर्स RBA और RAB. So is the topic clear to all of you?